वेलकम एस्पिरेंट्स टू दिस यूपीएससी 2026 मास्टर क्लास। देखो, आज हम लोग एक लंबा सफ़र तय करने वाले हैं एंड वी आर गोना डू इट वेरी क्विकली। आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस में ना द इनपुट आउटपुट रेशियो इज एब्सोल्युटली क्रूशल, राइट? अगर आप आज यहाँ हैं, इट मीन्स यू मीन बिजनेस। मेरे पास फ्लफ के लिए टाइम नहीं है और आपके पास भी नहीं होना चाहिए। मुझे आपका पूरा अटेंशन इधर चाहिए। We are doing a one-shot rapid revision of the absolute highest yield topics. तो चलिए, let's get straight into it. आज के हमारे 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट, एंशिएंट आर्किटेक्चर, देन द टेम्पल ट्रिनिटी, उसके बाद इंडो इस्लामिक वंडर्स, देन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स और लास्ट में द लेटेस्ट यूनेस्को साइट्स। अब ध्यान से सुनना, ये एग्जैक्ट थीम्स हैं जहां से यूपीएससी हर साल डायरेक्ट पॉइंट्स बनाता है। सो डू नॉट लूज योर फोकस, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। Okay, पहला section, Ancient Indian Architecture Mastery. We are beginning with the foundational heavyweights. And remember one rule clearly, whenever we talk about these early periods, the official Archaeological Survey of India, the ASI records, are our absolute baseline for all facts. इसमें कोई debate नहीं है, right? Whatever ASI says is what you mark. Now, Indus Valley Civilization के सबसे बड़ी खासियत क्या है? It's their sheer standardization. इन कीवर्ड्स को अभी के अभी दिमाग में छाप लो। उनके स्ट्रीट्स फॉलोड अ स्ट्रिक्ट ग्रिड पैटर्न कटिंग एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज एंड द ब्रिक्स बर्न्ड एंड बेक्ड ब्रिक्स और हमेशा 1:2:4 रेशियो में। एग्जामिनर्स लिटरली लव दिस स्टैंडर्डाइजेशन फैक्टर। देन यू हैव द स्पेशल डिफरेंशिएशन। द सिटाडेल ऊपर वाले पार्ट में फॉर पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड द लोअर टाउन नीचे फॉर रेजिडेंशियल एरियाज। Add to that their advanced drainage and water harvesting systems. Prelims में statement-based questions exact यहाँ से आएंगे, mark my words. इसको रट्टा मार लो। आगे बढ़ते हैं Mauryan pillar architecture पर। What is the big structural shift here? These are monolithic. एक single Chunar sandstone rock से carve किए गए थे ये pillars, completely unlike the earlier Achaemenian pillars which were assembled in pieces. And notice this key detail. These are standalone structures. ये किसी बड़े palace complex का हिस्सा नहीं थे. They stood alone. उनके base पर you'll find an inverted lotus and on top the animal capitals. Lion stands for royalty. Bull is for fertility, elephant shows grandeur, and horse represents renunciation. UPSC in symbolisms पर direct questions पूछता है, so you need to have this on your fingertips. Let's move to our next major high-yield topic, the temple architecture trinity. यहाँ से questions guaranteed आते हैं, and they are totally based on classic Indian architectural texts. चलिए, इन 3 fundamental styles को जल्दी से decode करते हैं. I want you to take a mental screenshot of this right now. North or South के features में बिल्कुल confused नहीं होना exam hall में. Nagara style में the main tower is a curvy linear shikara. Dravida में it's a completely different shape, a pyramidal vimana. And Visara, well that's your hybrid, famously known for its stellate or star-like plan, just like you see in the Hoysala temples. अब boundaries की बात करें तो Nagara temples में generally there are no boundary walls. But Dravida में grand gopurams and huge boundary walls are absolutely essential. What about water tanks? Common inside Dravida temple premises, but largely absent in Nagara. Concept एकदम clear रखना है. Next up, Indo-Islamic monumental wonders. जब हम medieval architecture की बात करते हैं ना, the NCERT Fine Arts textbook is our absolute gold standard source. वहीं से पढ़ना है, nowhere else. Let's break down this medieval architectural evolution. देखो, NCERT directly expects you to systematically analyze these medieval structures. उनका framework सिर्फ आर्च और डोम के डिज़ाइन पर फोकस नहीं है, but on the socio-cultural, political and geographic factors behind these forts and religious monuments. ये बस पत्थर और चूना नहीं है, guys. It's literally history carved into stone. You need to understand the why behind the structures. So the absolutely crucial point here is the structural leap brought in by the Delhi Sultanate. पुराने ट्रेबी-रेटेड कॉलम्स वाले स्ट्रक्चर्स से बाहर निकलकर हमें क्या मिला? द मैथमेटिकली एक्यूरेट ट्रू आर्च एंड मैसिव फ्री स्टैंडिंग डोम्स. एंड इन ह्यूज आर्चेस को स्ट्रक्चरली होल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग लाइमस्टोन मॉर्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड. डेकोरेशन के लिए दे रिलाइड ऑन एराबिस्क, इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक एंड बोटैनिकल पैटर्न्स, क्योंकि ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन जनरली अलाउड नहीं थी. And notice the material evolution over time. They started dominantly with red sandstone in the early Sultanate and Akbar's time, smoothly transitioning to pure, dazzling white marble under later Mughals. Alright, architecture is done. Now let's transition to the visual arts, the evolution of Indian paintings.
फिर से we rely heavily on NCERT texts to trace this incredible long chronological journey of Indian brushwork. ये internal chronology बहुत ज़्यादा fascinating है. Our prehistoric era starts with those basic stick figures and highly naturalistic animal hunting scenes at Bhimbetka. Here we jump forward to the Buddhist period, reaching an absolute peak with the magnificent fresco and mural traditions scaling the dark cave walls of Ajanta. Finally, fast forward, and we arrive at the grand courts of the Mughals, which ushered in the era of highly detailed, incredibly intricate miniature paintings. अब यहाँ ध्यान देना क्योंकि ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें एस्पिरेंट्स फंसते हैं. Confusing Jahangir and Shahjahan on exam day. ध्यान से सुनना. Jahangir's reign was the absolute zenith of miniature painting. उसी टाइम पर इंट्रोडक्शन हुआ of Pietra Dura, that beautiful marble inlay technique you see in tombs. Shahjahan, on the other hand, shifted the imperial focus right back to monumental architecture. He is the marble guy. Extensive use of white marble and those iconic 9-cast arches in places like the Red Fort. दोनों emperors का artistic focus totally अलग था. Please don't mix them up. All right. Take a deep breath. We are on our final segment, and I demand your absolute highest concentration here. ये latest UNESCO World Heritage editions हैं, and our ultimate authority for these current affairs, without a doubt, are the Official Press Information Bureau, or PIB, releases. So let's clearly separate the physical monuments from the cultural practices. On the tangible side, we recently saw the incredible Maratha military landscapes, and the Chiraideo Moidams join the prestigious ranks following Dhalavira and Santiniketan. On the intangible heritage side, alongside the energetic Garba of Gujarat and the massive Kumbh Mela, Deepavali has been the latest phenomenal addition. ये सब direct PIB confirmed additions हैं. Consider them prime targets for prelims 2026. सीधे marks मिलेंगे अगर ये clearly याद है. So here is the big reality check. Are you really ready for prelims 2026? देखो, ऐसा crisp high yield revision ही आपको directly edge देगा over the massive competition out there. We've completely separated the signal from the noise today. Go back, revise these concepts and lock down those marks. अगर आपको इस rapid fire, high output revision session से सच में फायदा हुआ, then make sure to hit that like button right now and subscribe to this UPSC 2026 series. एक आखिरी सवाल खुद से पूछना. ये सिर्फ पुराने पत्थर और पेंटिंग्स नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी की फाउंडेशंस हैं. Are you just memorizing history or are you actually understanding India? मेहनत करते रहो, keep pushing your limits and I'll see you in the very next session.